Hello students. In the previous video we started with the numericals of force chapter. We'll continue that today from question number 9. Now I told you a uniform meter rule. Uniform meter rule means a 1 meter rule. 1 meter means 0 to 100 centimeters. Okay, 0 to 100 centimeters. Balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark. They are saying that this scale balances on a knife edge. Okay, for example, this is a knife edge और इसके ऊपर scale रखी है ऐसे and scale is balancing like this on 58 centimeter mark means जो pivot है that pivot is at 58 centimeter mark. Okay, the pivot is at 58 centimeter mark, not at the midpoint. Midpoint is 50 centimeter mark. When the weight, the uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gf is suspended from one end. अब देखो 20 gf is suspended from one end. They have not told you which end, but that we have to think which end it may be. Okay, so see, understand. For example, let's say this is the ruler. I have kept this balanced on this pivot. Okay, but the midpoint 50 centimeter is here. Midpoint is here. Okay, so pivot is kept at 58 centimeter means ये जो रूलर है इसको कुछ ऐसे रखा है. This part is more and this part is less. Okay, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे बैलेंस करोगे like this, what will happen? The left end, the left side of the ruler will fall eventually. Correct? अगर ये ऐसे, अगर इसको मिड पॉइंट पे रखा then it will balance properly. Okay, but if you keep it like this, if you shift the pivot on the right side, okay, if you do not keep the pivot on the middle but you shift it on the right side, तो क्या होगा? This part will fall down. Okay, so same चीज़ यहाँ पे भी होगा. यहाँ पे there is 58 सेंटीमीटर पे इसको रखा है तो ये इधर गिर जाएगा ऐसे. Okay, but question में कहा है that the ruler balances horizontally by keeping a weight of 20 gf. Okay, so अगर ruler इस तरफ गिर रही है और मुझे इसको बैलेंस करना है तो I'll keep a weight here and इसको बैलेंस करूँगा ऐसे. करेक्ट, जैसे ये वाले केस में इफ रूलर इज फॉलिंग ऑन दिस साइड आई विल कीप अ वेट हियर 20 gf जिससे ये रूलर बैलेंस हो जाए. करेक्ट, बिकॉज मैंने पाइवट को शिफ्ट किया है. पिवट को, दिस इज द पिवट एंड आई हैव शिफ्ट दैट पिवट ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, समझ रहा है? सी वंस अगेन आई विल टेल यू. समझो ये पिवट है और मैं इसको ऐसे रखूँ स्केल को. ओके, सो ऑटोमेटिकली स्केल विल फॉल डाउन बिकॉज बीच में नहीं रखा है. बीच में रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिफ्ट किया तो इट विल फॉल डाउन. ओके, बट टू बैलेंस इट आई विल कीप अ वेट ईयर, आई विल अप्लाई सम वेट ईयर, सो इससे ये बैलेंस हो जाएगा ऐसे. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो ये रूलर इवेंचुअली इस साइड में गिरने वाला है तो उसको गिरने से रोकने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल कीप अ वेट ईयर. ओके, 20 gf इज सस्पेंडेड एट वन एंड. वन एंड मतलब ये वाले एंड पे वी हैव केप्ट अ वेट 20 gf. ओके, जस्ट रिमूव दिस ऑल. So now we have to draw the diagram which we have done and we have to find the weight of the ruler. I told you in the previous video that weight of the ruler means, okay, is at its midpoint. The weight of the ruler is at its midpoint. Okay, so that midpoint is here. So the weight of the ruler, let's say it is W and it will be here. Okay, because the ruler tilts on one side, on either side because of its own weight. Okay, किसी भी चीज़ को if you are balancing something, it will automatically, see, if you are balancing something on the pivot like this, let's say this is the pivot, if you balance it, keep it on the midpoint, it will balance properly. But if you shift it here, let's say if you keep it like this, because of the weight of this ruler, it will fall down automatically on this side. Or if you keep it here, because of the weight of this ruler, it will fall down. Okay, so from which point is the weight of the ruler taking its effect? It will take from its midpoint, from its center of gravity. Okay, so the weight of the ruler
is effectively applied from the center of gravity. Okay, so ruler का weight कहाँ है 50 GF. ये simple information है. whenever they ask you weight of the ruler 50 सेंटीमीटर पे मार्क कर देना. ठीक है, अब डायग्राम कंप्लीट है. now we will apply the principle of movements. so according to principle of movements, W1 into L1 is equals to W2 into L2. So see, here is the weight, we don't know the weight, so W1 into distance कैसे करते हैं, from the weight to the pivot. So this is the pivot से लेके weight तक का distance between the pivot and the weight is 8 centimeters. So I will have 8 here. The weight 2 is 20 GF. And the length, how far is this weight from 58 to 100? 58 से 100 कितना distance होता है? It is 42 centimeters. Okay, so this distance is 42 centimeter. Okay, and when I solve this, W1 is equals to 20 into 42 upon 8. 4 2s are 4 5s are 2 1s are 221. 21 into 5 is 105 GF. 105 gram force. This will be my answer. Okay, copy the sum. Tenth sum is also easy. Just they have numbered the scale differently. Like in every sum they will do it 0 to 100. Here they have written this is 0, 0 to 50, 0 to 50. Okay. So now the question says the uniform bar is supported at its midpoint. It is supported at the midpoint. A weight of 40 GF is placed at a distance 40 centimeter to the left of point O. So this is the point O, और point O के left में 40 centimeter पे we have kept a weight 40 GF. Okay, how can you balance the weight? How can you balance the bar with a weight of 80 GF? अब यहाँ पे अगर weight रखा है तो definitely this ruler will fall, this bar will fall on the left side. अब इसको balance करने के लिए I have to keep a weight here. Okay, but कहाँ रखूँ यहाँ पे weight? Where should I keep the weight? That is what they are asking you. Okay, weight मुझे पता है कितना है, कितना weight है? Weight is 80 GF. But कहाँ रखना है वो नहीं पता. So we can find that easily. So according to the principle of movements, so weight 1 is 40 GF. What is this distance at which this weight is kept? It is kept at 40 centimeter distance. Weight 2 is 80 GF, and where it is kept we don't know. So L2, this 40 into 40 upon 80, 20. I'm getting the answer as 20 centimeter, and it will be here 20 centimeter on the right of the pivot. Okay, so 20 centimeter to the right of point O. This will be my answer. Okay, pause the video and copy the sum. Next, question number 11. There is a diagram on the next page. There is a diagram of question number 11 also. The ruler is balanced at its midpoint, 50 centimeter mark. This is 0, 100. You have a weight at 40 centimeter, sorry, at 10 centimeter, 40 GF weight, and there is another weight
at 90 centimeter, that is 20 GF. This is weight. Let's see what they are saying. First they are asking you, is the meter rule in equilibrium? In equilibrium means कहीं एक साइड टिल्ट कर रही है या बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है. दे आर आस्किंग यू. सो कैसे पता चलेगा? इफ दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट आर इक्वल. ओके, सो लेट्स सी. ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट इज द मूवमेंट? 40, वेट इज 40 इंटू दिस डिस्टेंस. 10 मत लिख देना, 10 0 to 10 सेंटीमीटर है. डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द पाइवट. सो 10 से लेके 50 इज 40 सेंटीमीटर्स. 20, 30, 40, 50, 40 centimeters. So 40 equals, just write here, W1 into L1 is equals to W2 into L2. And on the right hand side you have again 50 से लेके 90, that is 40 centimeter into 20 GF. So 40 into 20. So this is 1600 and this is 800. Is it equal? No, it is not equal. So no, the rule is not in equilibrium. Okay, then they are asking you, if not, how can you bring the ruler? No, they are asking you, how will the ruler turn? How will the ruler turn? So this weight is more than this weight. Okay, if this weight is more, the ruler will turn like this. Okay, it will turn like this, means which direction is it? Anti-clockwise direction. Okay, it is anti-clockwise direction. So in the second part, write it will turn in anti-clockwise direction. It will turn in anti-clockwise direction. Third, they're asking us, how can the ruler be brought into equilibrium by using an additional weight of 40 grams? Now, I know that the ruler is not in equilibrium. Okay, it is falling on this side, but I want to bring it in equilibrium. Okay, if I want to bring this in equilibrium, I have to add some weight here, जिससे वो बैलेंस हो जाए. And weight दिया हुआ है. कौन सा weight है? The weight is 40 kgf. So 40 kgf का 40 gf weight है. ठीक है, एक्स्ट्रा वेट विच आई हैव एंड आई हैव टू प्लेस इट समवेयर. ज़रूरी नहीं यहीं पे रखूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी रख सकता हूँ. कहाँ रखना है वो बताना है. ठीक है, सो वेयर शुड दिस 40 GF बी केप्ट so that the ruler is in equilibrium? How will I find this? See, first of all, the movement on the left side is 1600, the movement on the right side is 800. So कितना कम है ये साइड में मूवमेंट? 800 है, 800 कम है, टोटल 1600 चाहिए बैलेंस होने के लिए. सो देर इज द मूवमेंट ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज 800 लेस. करेक्ट, 800 लेस है ये वाला मूवमेंट. समझ रहे हो ना? सी, इट इज मूविंग लाइक दिस विथ 1600 मूवमेंट एंड इट इज मूविंग लाइक दिस विद 800. ये 1600 है, ये 800 है. ठीक है, सो यहाँ पे और 800 चाहिए, दोनों सेम हो जाएगा. सो अब वो 800 मूवमेंट कैसे मिलेगा? व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स? फोर्स इनटू डिस्प्लेस डिस्टेंस. ओके, सो 800 मूवमेंट चाहिए. ठीक है, वेट, व्हाट इज द वेट वी हैव? फोर्स मीन्स वेट. कितना वेट है हमारे पास? 40 GF. एंड डिस्टेंस वी डोंट नो वेयर टू कीप इट. ओके, और यू कैन यूज द फॉर्मूला लाइक दिस ऑल्सो. मूवमेंट ऑफ फोर्स is W into L. You can use it like this, but it's okay. Now the distance is 800 upon 40, that is 20 centimeters. Okay, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस. इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, नहीं. इट शुड बी केप्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ से 20 सेंटीमीटर रखना है इधर. ठीक है, मीन्स 70 सेंटीमीटर वाले मार्क पे इस वेट को रखना है. ओके, तभी इसको यहाँ पे रखूँगा, तभी तो ये जो इस साइड टिल्ट हो रहा था विल गेट बैलेंस्ड. ओके, पहले ये टिल्ट हो रहा था ऐसे, इट विल गेट बैलेंस्ड नाउ बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल वेट. ओके, सो
we will place 40 GF at the 70 centimeter mark. Okay. Copy the sum. Pause the video and copy it. I'll continue with the next sum. Now, when a boy weighing 20 kgf sits on one end of a 4-meter long seesaw. Okay, so there is a seesaw. ये seesaw है. Okay. A boy weighing 20 gf sits one end of a 4-meter long seesaw. So this is 4-meter long seesaw. Okay. एक end पे there is sitting a boy who is 20 kgf sitting on one end. How can it be brought to horizontal position by a man weighing 40 gf? So यहाँ पे a man weighing 40 kgf. Okay, उसको कहाँ बैठना चाहिए so that this seesaw will become horizontal? So very simple. Firstly, this entire distance is 4 meters. Okay, means ये 2 meters है and this full distance is 2 meters. Okay, so according to principle of movements, I am writing short form, you write properly. W1 into L1 is equals to W2 into L2. Okay, अब ये साइड का वेट कितना है 40 kgf, मैन का वेट 40 है, but I don't know where the man should sit. Okay, so I will keep L1 as it is. On the right side the boy is sitting at the end 20 kgf and at the end means उसका distance 2 meters है, पिवट से बॉय का डिस्टेंस 2 मीटर्स है. अंडरस्टैंड, ये पूरा 4 मीटर्स था, मीन्स पिवट से बॉय इज 2 मीटर्स. सो व्हाट इज L1? 20 into 2 upon 40, that is 1. Okay, so answer is 1 meters. Okay, so the man should sit at a distance of 1 meter from the center on the opposite side. Okay, so write this. The man should sit 1 meter on the opposite side from the center, or you can write from the pivot. Okay, pause the video and copy it. Next sum. 13th one, very simple. Very simple. A physical balance has its arm 60 centimeter and 40 centimeter. So there is a physical balance जिसके arms कितने हैं? This is 60 centimeter and this is 40 centimeter. What weight kept on the longer arm will balance an object of 100 gf kept on other pan? So ये longer pan पे क्या weight होना चाहिए? We don't know. So that it's shorter pan पे there is a weight of 100 gf. Okay, so we have to find this weight. So simple, according to principle of moments, so यहाँ का weight longer pan, this is the longer pan, this is the shorter pan, so we don't know the weight of the longer pan, but we know it is 60 centimeter far, and the second weight is 100 into 40, so W1 is equals to 4000 upon 60. This answer is 66.67 gf. Okay, done. 14th sum.
14th sum. Now in the 14th sum, this sum is similar to the 11th sum. The diagram shows that there is a scale, a weight of, shows a uniform meter rule weighing 100 GF. So they have given you the weight of the ruler. Okay, a uniform meter rule pivoted at its center. So ये उसका center है, ठीक है? And they have given you the weight of the ruler. Weight of the ruler is 100 GF. Let's see where it will be useful in the sum. Pivoted at its center. Though two weights 150 GF and 250 GF hang from point A and point B of the meter rule such that this distance is 40 and this distance is 20. So first part, we have to find the total anti-clockwise movement about O. Anti-clockwise movement means this movement. This is anti-clockwise. Okay. So anti-clockwise इसकी A की वजह से हो रहा है anti-clockwise. Correct. B की वजह से तो clockwise हो रहा है. B is moving clockwise. So पहले anti-clockwise movement पूछा है. Okay. So anti-clockwise movement is weight into distance, that is 150 into 40, 6000 GF centimeter, because ये GF में है और ये सेंटीमीटर में है, तो we are keeping it in CGS unit, GF centimeter. Second, the total clockwise movement. So the clockwise movement is, it is weight into distance, that is 250 into 20, 5000 GF centimeter. Okay, then third part, we have to find the difference of the anti-clockwise and clockwise movement. So difference of this anti-clockwise and clockwise movement, very simple. Difference of anti-clockwise and clockwise. Okay, so 6000 minus 5000, that is 1000 GF centimeter. Okay, and कौन ज़्यादा है? See, this is 6000 and this is 5000. मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इस तरफ का मूवमेंट ज़्यादा है, इस तरफ का मूवमेंट ज़्यादा है, इस तरफ कम है. So that means रूलर ऐसे जाने वाला है. Correct. This rod, ruler, anything will go on this side because this movement is more. Okay. Now the distance from O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. That means I know that इस side का जो force है that is 6000, इस side का जो force है that is 5000. Okay. So इस वजह से ruler is not balanced. Okay. But to balance the ruler मेरे पास एक weight है extra 100 GF. Okay. उस weight को मैं कहाँ पे रखूँ यहाँ पे so that the ruler is balanced. So first of all you have to understand on the clockwise side 5000 है, होना कितना चाहिए? 6000 to balance. So यहाँ पे 1000 कम है, this difference यही कम है यहाँ पे. So ये 1000 movement चाहिए using this weight 100 GF. Okay. So on the right side we need 1000 GF centimeter movement. Okay, so movement of force is equals to weight into distance. कितना movement चाहिए? 1000. Weight कितना है? 100. And where should you keep it? D. Okay, so divide this is 1000, sorry. 1000 upon 100 is 10. So 10 centimeter. Distance is 10 centimeter. That means you should keep this weight 100 GF 10 centimeter from the pivot, somewhere here. Pivot से हमेशा distance कहाँ से होता है? Pivot से. तो pivot से 10 centimeter दूर यहाँ पे अगर weight लगा दोगे, so this movement will also become 6000. Okay, so I will write here that place 100 GF 10 centimeter from the point O. Okay, pause the video and copy the sum.
15th one. It says a uniform meter rule of weight 10 GF. So ruler का weight दिया है, ruler का weight is 10 GF, is pivoted at its zero mark. It pivoted at its zero mark means ये ruler है, okay, if this is 0 and this is 100, so जो pivot है it is here at zero mark, means 100% this ruler is going to fall on this side. बैलेंस ही यहाँ पे करोगे, बीच में भी नहीं किया है कहीं पे, so the ruler will fall like this on this side. Okay, so ये ऐसा ही होने वाला है, it will fall. But कुछ होगा आगे, let's see. What movement of force depresses the ruler? Means ये जो ruler है it will definitely fall on this side. Okay, but because of what force will it falls? It will fall because of its own weight. This ruler is falling because of its own weight. Okay, और इस ruler का weight कहाँ पे apply होता है? Where is the weight of the ruler? At its center. Okay, so this weight is the weight of the ruler. This weight is the ruler's weight, that is 10 GF. Okay, so what is the moment of force? We have to calculate the moment of force because of this weight. Okay, so the moment of force equals this weight W into D. Okay, W is 10 GF, weight of the ruler is 10 GF, and how far is this from the pivot? Okay, ये पूरा डिस्टेंस नहीं ले सकते, वेट और पिवट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल कम हियर ऑलवेज. ओके, सो दिस इज द रूलर वेट जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, एंड दिस इज द डिस्टेंस. सो 0 टू रूलर का वेट कहाँ पे होता है? 50 सेंटीमीटर मार्क. सो 0 to 50 द डिस्टेंस इज 50. दैट मीन्स what is the force? 50 GF centimeter. Okay, now how can it be made horizontal? By applying a least force. So we have to make this ruler horizontal now. We know that the ruler is falling down. Okay, ये गिर रही है ऐसा because of its weight. तो अब इसको मुझे अगर ऊपर लाना है तो I will apply some force here. ठीक है, ये वाला force, this weight is bringing the ruler down. So I will apply some force to bring the ruler up. Okay, and see जो upward force है to see, अगर ये गिर रहा है नीचे ऐसे, ठीक है, तो मुझे इसको ऊपर लाना है. तो ऊपर लाने के लिए मैं फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी, कौन से भी पॉइंट पे अप्लाई करके इसको ऊपर ला सकता हूँ. बट इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग बाय द लीस्ट फोर्स. इस लीस्ट फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स लीस्ट कब होगा? व्हेन द डिस्टेंस इज मैक्सिमम. करेक्ट, दैट इज व्हाट इज द चैप्टर अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, is force into distance. If you increase the distance, the force will decrease. Okay, so if you want the least force, then the distance should be maximum. Means 0 से सबसे farthest distance कौन सा है pivot से? It is 100 meters. So I will apply the upward force here. Okay, and कितना force लगाना है, कितना weight रखना है, that I don't know. Okay, so I will calculate this weight. Okay, counter किसको करना है? 500 GF centimeter. This 500 GF centimeter की वजह से ये नीचे आ रहा है. So यहाँ से कितना करूँ, कितना वेट रखूँ, सो दैट आई विल गेट 500 GF अपवर्ड मूवमेंट, जिसके वजह से द रूलर विल बिकम हॉरिजॉन्टल. ओके, सो मूवमेंट ऑफ अपवर्ड फोर्स इज W into G. How much movement do you want upward to keep the ruler horizontal? You want 500 GF. ये सेम फोर्स है, ठीक है. अगर 500 से नीचे आ रहा है तो आप भी 500 से ऊपर भेज दोगे तो बैलेंस हो जाएगा. करेक्ट. वेट कितना रखना है नहीं पता, बट डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना दूर है पिवट से? 0 to 100. दिस इज 100 सेंटीमीटर अवे. डिस्टेंस इज 100. व्हेन यू डिवाइड दिस 500 अपॉन 100, व्हाट विल बी द वेट यू गेट? यू विल गेट 5 GF वेट. ओके, सो 5 GF का फोर्स अप्लाई करना है ऊपर की डायरेक्शन में. उससे कितना मूवमेंट मिलेगा? 500. एंड 10 GF से 50 पे 500 मिल रहा था. नाउ दीज टू मूवमेंट्स आर सेम, सो द रूलर विल रिमेन हॉरिजॉन्टल. ओके, डन.
Pause the video and copy it. Sixteenth sum is very easy. Only you have to read the question properly. Pause the video and copy this sum. In the 16th question it says a uniform half meter rule. हाफ मीटर रूल मतलब आधे मीटर की रूलर है. हाफ मीटर मीन्स 0 to 50 सेंटीमीटर. दिस रूलर इज बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क. ये मिड पॉइंट है. इट इज बैलेंस्ड हियर एट 29 सेंटीमीटर मार्क. ओके. वेयर इज द रूलर वेट? रूलर वेट इज ऑलवेज एट इट्स मिड पॉइंट. सो रूलर का वेट यहाँ पे है. ओके. When a mass 20 gram is hung from its one end. Okay, so see, मैंने आपको बताया है कि if you keep the ruler like this, ठीक है, जो longer arm है, if you are trying to balance the ruler like this longer arm will fall down because of the weight of the ruler. ये ऐसे रखा है, so this will definitely fall like this. अब इसको बैलेंस करने के लिए वेट कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा, on this end. Okay. सो जो 20 ग्राम वेट है, दे हैव नॉट टोल्ड यू ऑन विच एंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो शॉर्टर होता है, शॉर्टर आर्म, वहीं पे ऑलवेज यू विल अप्लाई द वेट. सो दिस 20 ग्राम इज केप्ट हियर. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दिस 20 ग्राम द रूलर इज बैलेंस्ड. वी हैव टू फाइंड दिस वेट ऑफ द रूलर, एंड इट इज एट 25 सेंटीमीटर मार्क. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, W1 into L1 is equals to W2 into L2. What is W1? This weight. We don't know the weight of the ruler. What is the distance from here to here? 25 to 29. This is 4 centimeters. This weight is 20. And this distance from 29 to 50 is 21 centimeters. Okay. So W is 20 into 21 upon 4. 4 ones are 4 5s are. So you will get the weight as 105 grams. Weight will be 105 grams. Draw the diagrams properly. Each and every diagram. Make sure you have drawn the diagram properly, because diagram देख के ही बाद में समझ में आएगा कि क्या करना है सम में. Okay, so if you have not drawn the diagram, rewind the video and draw the diagram again. Diagram will carry marks. 4 मार्क का सम होगा तो 1.5 mark will be for the diagram. Now the 17th, the biggest question. Okay, but very interesting one, because it will teach you a lot of concepts. 18th one is very simple. 17th one says a uniform meter rule of mass 100 grams is balanced on a fulcrum at a mark 40 centimeter. So there is a ruler, meter ruler, 0 to 100 centimeters, of mass 100 grams, means the weight of the ruler is 100 grams, is balanced on a fulcrum at 40 centimeter mark. So fulcrum is here at 40 centimeter mark. So if the fulcrum is here, definitely ruler will fall here. Ruler will fall on this side. But we are balancing this ruler. It is balanced by suspending a mass, unknown mass m at 20 centimeter mark. तो definitely अगर ये इस तरफ गिर रहा है तो यहाँ पे अगर weight लगाऊंगा तो this will get balanced. Okay, so means 20 centimeter पे we have an unknown mass m. Okay, find the value of m. So according to principle of moments,
What is the weight 1? Mass 1 m. What is the distance of this mass from the fulcrum? That is 20. What is the weight 2? Weight 2 means the weight of the scale. And what is the distance 40 to 50? That is 10. So what will be the value? 1000 upon 20. That is 50 grams. So m is 50 grams. Straightforward. First part was very easy. Now, this part is important. The second part says, to which side will the rule tilt if the mass m is moved to 10 centimeter mark? Means they are saying कि जो mass m यहाँ पे था इसको मूव कर देंगे अभी. कहाँ मूव करेंगे? 10 सेंटीमीटर मार्क पे. ओके, सो आई विल ड्रॉ डॉटेड लाइंस. ओके, इस m नाम देता हूँ इसे. ठीक है, अब इसको 10 सेंटीमीटर मार्क पे मूव कर दिया है. करेक्ट. लेट्स से दिस इज m2. थोड़ा समझने के लिए. ओके, समझ रहा है? इसको यहाँ पे मूव कर दिया. अब यहाँ मूव करने की वजह से दे आर सेइंग दैट व्हाट विल बी द चेंज. क्या इसका मूवमेंट बढ़ेगा या इसका मूवमेंट कम होगा? और जिस वजह से जो रूलर बैलेंस्ड थी वो किस तरफ टिल्ट होगी? इस तरफ टिल्ट होगी या इस तरफ टिल्ट होगी? दे आर आस्किंग यू दैट. ओके, सो लेट्स फाइंड on which side will it tilt. So left side पे. First of all, the second question is you have to just mention yes or no on which side will it tilt. Okay, so if you increase the distance, आपको समझना है, if you are increasing the distance the movement will increase. See, पहले ये जो m था डिस्टेंस कितना था? 20 से 40 मीन्स 20 सेंटीमीटर्स. इफ़ यू आर मूविंग इट टू 10 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस कितना हो गया है? 30 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट हैज इंक्रीज्ड. ओके, देयरफॉर द मूवमेंट on left side will increase. Okay, so where will the rule tilt? It will tilt on the side of mass m. Okay, so mass m ये साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है. सो ये रूलर किस साइड टिल्ट होगा? अब लेफ्ट साइड टिल्ट होगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ? रिजल्टेंट मूवमेंट मीन्स ये साइड का मूवमेंट और ये साइड का मूवमेंट दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट. ओके, सो लेट्स फाइंड बोथ द मूवमेंट्स. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मीन्स जो इस वेट की वजह से होता है. ठीक है, नाउ द वेट इज हियर ओनली. मास m 10 पे ही है. ठीक है, सो व्हाट इज द मूवमेंट? मास m, व्हाट इज द वेट ऑफ मास m? 50 ग्राम्स. वेट इनटू डिस्टेंस, 50 ग्राम्स इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 से लेके 40, इट इज 30 सेंटीमीटर्स. ओके, सो द मूवमेंट इज 1500 gf. ओके, देन व्हाट इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस वेट. ओके, वो कितना है? 100 इंटू द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज 100 इंटू 10 centimeters, that is 1000 gf centimeter. So now what is the resultant movement? Resultant means difference. Resultant movement is 1500 minus 1000, that is 500 gf centimeter. Okay, and which is more, anti-clockwise ज़्यादा है या clockwise ज़्यादा? anti-clockwise.
सो रिजल्टेंट मूवमेंट विल ऑल्सो बी एंटी क्लॉकवाइज. जो ज़्यादा है वो इसका इफेक्ट आएगा. ओके. Okay. Now they are asking us, how can the rule be balanced by another mass of 50 grams? So इतना समझ में आ गया कि इस तरफ का जो मूवमेंट है वो आ रहा है 1500, इस तरफ का जो मूवमेंट है वो आ रहा है 1000. सो 500 का डिफरेंस है. यहाँ पे 500 ज़्यादा है. करेक्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. सो वी हैव टू बैलेंस इट नाउ. अब ये बैलेंस्ड नहीं है. दिस इज लाइक दिस. ओके. आई हैव टू मेक इट बैलेंस्ड. सो वेयर शुड आई ऐड 50 ग्राम्स मास? 50 ग्राम्स कहाँ पे ऐड करूँ सो दैट जो डिफरेंस है, कितना मूवमेंट कम है यहाँ पे ऑन दिस साइड, 500 से GF सेंटीमीटर इज लेस. ओके. अभी निकाला था ना हमने रिजल्टेंट मूवमेंट 500 GF सेंटीमीटर. यही तो डिफरेंस है, यही कम है ऑन द क्लॉकवाइज साइड. ओके. सो ये वाला मूवमेंट चाहिए यूजिंग 50 ग्राम मास. ओके. सो मूवमेंट required on the right side is W into D. What is the movement required on the right side? 500 GF centimeter. Weight to be used is 50 into distance. We don't know where to keep that movement. So divide this. So distance is 10 centimeters. Okay. The distance is 10 centimeters. Now 10 centimeters from the fulcrum. Okay. So where should I keep? 10 centimeter from this 40 means here. That means I should keep that 50 gram mass here at this point, 10 centimeter from the pivot. Okay. So at which point I am keeping it at 50 centimeter mark. 50 centimeter mark पे I will tie this 50 gram weight so that मुझे additional 500 movement मिलेगा जो इसके साथ add होके the ruler will balance. Okay. So I will write here, by suspending mass 50 grams at 50 centimeter mark, the ruler will balance. Okay. Next. The last sum. Now this is not calculative sum. This is just understanding. These type of sums generally do not come in exam. Let's understand what they are saying. They have drawn a diagram. They are saying a uniform bar of length L centimeters. This total is L centimeters. Okay, यहाँ से लेके यहाँ तक. So this is L by 2 and this is L by 2. Okay, L by 2, L by 2. Total is L centimeters. L meters. Is supported at ends and a load W kgf is at its middle. In equilibrium, find the reaction R1 and R2 at the ends. Means they are saying that, let's say ये दो supports है and you keep a ply here, a wooden sheet. Okay, समझो आपने ये रखा and then you keep some weight here on this wooden sheet. अगर इस पे weight रखा, so this wooden ply will bend in this direction. Okay, so ये this weight will try to bring this ply down. Okay, समझो कुछ उससे ऐसा होगा नहीं, but just understand that कुछ ऐसा हो जाएगा ये. It will try to bend the ply.
Now to hold this weight, these two ends here will apply force on the upward direction. तभी ही इसको होल्ड कर पाएंगे, और else ये टूट जाएगा. Okay, but this doesn't happen. ये जो supports है, these support are applying force in the upward direction. Okay, so they are asking you that what is the value of this R1 and R2 with respect to this W weight. Okay, so first of all, we have to understand that this reaction force R1 and R2, this force together are carrying this weight W. करेक्ट. अगर ये 100 kg का वेट है, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके इस 100 kg को उठाया है. करेक्ट. सो दिस R1 प्लस R2 इज W. Okay, now these both distance are equal. This is L upon 2 and this is L upon 2. Okay, so on both side the movement is same. R1 into L upon 2, R2 into L upon 2. The movement on both sides will be same. मतलब ये जो weight W है, ये आधा इसने उठाया है और आधा इसने उठाया है. Correct. So the movement on both sides is same. Okay, that means इस साइड का मूवमेंट क्या होगा? R1 फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो R1 इंटू L अपॉन 2. एंड इस साइड का मूवमेंट क्या होगा? R2 इंटू L अपॉन 2. ओके, so this L upon 2 will get cancelled and you will get R1 is equals to R2. Both weights are same. If this both weight are same, R1 और R2 अगर इक्वल है, तो इस W वेट को इन्होंने कैसे डिवाइड किया होगा? हाफ R1 ने लिया है और हाफ R2 ने लिया है. करेक्ट. सो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी? R1 विल बी W अपॉन 2 kgf एंड R2 विल बी ऑल्सो W अपॉन 2 kgf. समझ रहे हैं? जैसे अगर ये 100 gf है, सो ये वाले साइड ने 50 gf हैंडल किया है एंड दिस साइड ने 50 gf हैंडल किया है. ओके, सो ये रिएक्शन फोर्स ने W अपॉन 2 एंड दिस रिएक्शन फोर्स ने W अपॉन 2. ना इफ़ यू ट्राई टू जस्ट लुक एट द सम, देख के ही समझ जाता है कि अगर ये W वेट है तो आधा इसने लिया है, आधा इसने लिया है. बट हमें इसको करके दिखाना पड़ता है ऐसा. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज द लास्ट सम. विद दिस वी कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फोर्स. यू कैन ट्राई सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन. That's it for today. Thank you.